ओके सो लास्ट टाइम हमने आई थिंक उसको लॉरेंस मॉडल स्टार्ट किया था, उसको डिस्कस किया था, और आज हमने उसकी जो कोडिंग है वो हमने करनी है सिमुलेशन की, ठीक है। यस सर। जी सर। कि जो आइटरेटिव इक्वेशन है, आइटरेटिव इक्वेशन जो है वो लॉरेंस मॉडल के लिए दे विल बी ऑब्टेन फ्रॉम द लॉरेंस इक्वेशंस, और जो लॉरेंस इक्वेशन से आइटरेटिव इक्वेशन आएंगे उनमें कौन सा मेथड अप्लाई होता है, आइलर मेथड या क्रोमर मेथड? क्रोमर। जी, क्रोमर मेथड क्यों यूज होता है? सेकंड ऑर्डर वाली क्वेश्चंस होती हैं। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, और जिस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्रोमर मेथड अप्लाई होता है, आइलर मेथड फेल हो जाता है, जस्ट लाइक दैट इसमें भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व है, सो दैट्स व्हाई द क्रोमर मेथड इज you can say used in order to get the results near to the reality. Okay. Okay. ये हमने कर तो नहीं लिया था? अच्छा, ये नहीं किया। Students, these are the equations, equation 3.12, which are called as, collectively called as Lorentz model. इनकी iterative forms आप कन्वर्ट बनाएंगे तो पहली iterative equation जो है that is xi plus 1 is equal to xi plus sigma times yi minus xi over into del t, ठीक है। जी और सर। ये xi plus 1 is equal to that one, तो इसमें और yi plus 1 is equal to yi minus xi zi plus r xi minus yi, so यहाँ पे भी zi plus 1 is equal to zi plus xi yi minus bzi, ठीक है। आइटरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे ओके स्टूडेंट, सबसे पहले वी विल बी, लेट्स से we have to design the form, okay, for input and output. We want to go for Windows form application. We will name it Lawrence model. Lawrence model, ठीक है। Okay. Student, after starting out this Windows form application or the window form project, the first stage is the designing stage. Designing stage means you have to design it for the input values, let's say for the input values of x, y, z, time, del t, sigma, r, b. So these will be the input values for every type of graph, okay? So let's do it.
You will open, let's say, the toolbox. And from the toolbox, you will select the tools like, let's say, button. Okay, button select करने के बाद you can put it at the center, the top, and you can label it with some text. Let's say start. Okay, and if you want to attach multiple, let's say एक ही इसमें हम कर लेते हैं. This is, let's say, xt. Start की बजाय हम लिख लेते हैं xt. Like मीन्स xt ग्राफ के लिए हमने xt का बटन लगा लिए, और इसी तरह वाई टी के लिए, जेड टी के लिए. सो यू विल, ताकि डिजाइनिंग जल्दी हो जाए और जल्दी हमारा ये काम काम मुकम्मल हो जाए. सो यू कैन पुट हियर, change the label YT, and over here ZT. And स्टूडेंट्स, एक तो ये है कि इसको आप ये कर लें, अदरवाइज यू कैन आल्सो से, लेट्स से, आप रेडियो बटन्स भी कर सकते हैं, चेक बॉक्सेस भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है. ओके, इसी तरह आप यहाँ पे एक्स वाई का, एक्स जेड का और वाई जेड का कर सकते हैं. एक्स का वाई के साथ और एक्स का जेड के साथ. मैंने सो स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, वाई जे के साथ. Yes, sir. If these are possible, you can say the choices for plotting the graphs: x versus time, y versus time, z versus time, x versus y, x versus z, and y versus z. So these are the possible scenarios. These are the possible, you can say, combinations for getting graphs. Okay, and on one side you can decide the input boxes in form of text boxes. सो एक्स के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स, फिर वाई के लिए, फिर जेड के लिए, फिर टाइम के लिए, फिर डेल टी के लिए, सॉरी, फिर डेल टी के लिए, फिर सिग्मा के लिए, फिर आर के लिए, फिर बी के लिए. ओके, सो यू कैन पुट हियर. ओके, और इनके लिए लेबल्स तैयार कर लें. लेबल्स, एक्स के लिए लेबल है, वाई के लिए, जेड के लिए, टाइम के लिए, डेल टी के लिए, सिग्मा के लिए, आर के लिए, बी के लिए. तो मैं इकट्ठे इधर जनरेट कर लिए. स्टूडेंट्स, इनके ऊपर लेट्स से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं.
Go to the properties and change the text of the label. Let's say you will say here X input X, then you will say Y, then Z, then T, then del T. इसका मैं font बाद में करता हूँ. Then is a sigma, then is R, and then is a, let's say, B. और इनका कलेक्टिवली आप इनका क्या कहते हैं साइज चेंज कर सकते हैं. ये स्टूडेंट नजर आ रहे हैं एक्स वाई जी टी डेल टी सिग्मा आर बी. Yes, sir. So these are, you can say, the facilities for inputting the values of x, y, z, time, del t, and the parameters sigma, r, and d. Okay, as needed by the iterative equation, which will be obtained from the discretization of the Lorenz equation. Okay, so this is very simple. You can say इसमें आप अपनी तरफ से class बना लें तो it's okay. Otherwise, even then you can use. Okay. और ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनका भी आप साइज बड़ा कर सकते हैं ताकि वैल्यूज में जो आप रखते हैं वो क्लियरली नजर भी आए. Okay, so your designing is almost done. आप ग्राफ स्टडी कर सकते हैं स्टूडेंट्स और इसमें आप क्या कहते हैं लेबल लगा लें एक इसके ऊपर लिखा हो सिमुलेशन ऑफ लॉरेंस मॉडल ओवर हियर.
ओके, अब स्टूडेंट्स क्या करना हमने, एक्स वाई जी टाइम डेल्टा सिग्मा आर और बी की पर्टिकुलर वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द केसेस व्हिच आर प्रोवाइडेड इन द बुक. लेट्स से you will be providing, and in each button you will be writing down the coding which is needed. Let's say in case of button x versus time xt, you will be willing to draw the graph between x and t under special circumstances for the particular values of x, y, and z at the start, and time del t, and the values of the parameter sigma r and b. इसी तरह y t के लिए, z के लिए, x y के लिए, x t के लिए और y z के लिए. So this is very simple. Okay, मैं ज़्यादा वो सिंपल वे में बता रहा हूँ अपनी तरफ से, हमने वो क्लास इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, तो वो करवा भी सकते हैं आप, या फिर उसके बगैर भी काम कर सकते हैं. ओके, so Okay, sir. you want to introduce, you can say, what do you say, a class of Lorenz model or not? मेरे को class introduce करवा लें, that will be, you can say, more easier, right? So go to the project menu and add class and name it. The class name will be, let's say, Lawrence model. Yeah, Lawrence model. Okay, add. And over here, you know, you can say the conventional structure of a class, कि class के अंदर दो हिस्से होते हैं, data variables and functions. So first of all, you will be declaring here, what do you declare first of all in a class? Data Data variable. variable. Okay. So let's say the declaration of the data variable depend upon your problem, what type of, you can say, variables you want to handle. Let's say the clearly seeing variables are, let's say, x, y, z, time, del t, sigma, r, b. Okay, and you can declare them to be public. Let's say whenever needed, you can access them also outside the class. Okay, and after the declaration of after defining the variables, data variables, then the turn is of the functions inside the class. Now the functions, and among the functions, the first function is the constructor of the class. Let's say that is the constructor of the class. Students, ऐसे ही है ना? Yes, sir. You will say, let's say, conductor is always taken to be public and it has no return type. Its name is, that is the name of the class itself, and depends upon what type of parameter you want to provide it. इसको कौन से आर्गुमेंट्स आप पास करना चाहते हैं? अगर सारे करना चाहते हैं, सारे लिख दें, और
इनको ना आप थोड़ा सा डबल डबल कर दें ताकि दिस का इस्तेमाल ना करना पड़े। आप बात समझ रहे हैं? Load as R. Okay, so look at X is a double X, Y is a double Y, Z is a double Z, and T is a double T. And what do you say? DT, double T, double T is DT. Okay, then what? Sigma is S. Okay, then R, R is RR, and B is BB. Do you get it, students? Yes, sir. Okay, so very simple. The constructor is over. And after the constructor, you can define the other functions for simulating the Lorenz equation, the Lorenz model. So the next step is now other functions. Like, and every function is tried to be made to be public so that it can be accessed outside, okay? Let's say name it update, okay? और कोई भी नाम इसका रख सकते हैं आप, evolve, okay? And inside the wall, you can say write down here the iterative equations, okay? देखिए पहली iterative equation जो है that is xi plus 1 is equal to xi times sigma yi minus xi, okay? इसी तरतीब में आप देंगे। तो आप इसको कैसे लिखेंगे देखिए x is equal to x, xi plus 1 means left side variable x will be automatically become xi plus 1. Then is xi plus 1 is equal to xi I plus sigma times क्या है sigma times yi minus xi, okay? So this is the first equation. Then y will be सर डेल्टा डी नहीं मल्टीप्लाई किया। thank you, multiply with delta. Then yi plus 1 will be equal to yi minus बाहर ले लीजिए आप, this will be x times z or minus rx
okay, and plus yi into del t, okay. And then is z I plus 1, I plus 1 is zi plus x times y and bz b times z into del t, okay. Also time will also be taken inside the same function, okay. तो सारे जो iterative equations and they are taken inside the evolve function, okay. This class is almost over. Now you will go to the design of the farm. Let's say you click here xt. So you know that you need to get, let's say, draw the plots graphically. You want to draw the graphs also. So in that case, you need the graphics, okay? Graphical setup. So that's why you will be going to the project and you will say add existing item. And from the add existing item, I would say, let's say, I will go to BS 7th simulation lab, and over there I will look for, let's say, the graphical setup class, which is already available as a facility. Okay, so I will include that one in my, you can say, the code, so that I can benefit that already existing class. Okay, and I will open this and I will change its, you can say, namespace according to the Lorenz model, okay? Because our namespace, the active namespace name is the Lorenz model. So in place of oscillatory motion, I will put the namespace name to the Lorenz model. So if I change this namespace to the Lorenz model, now the functionality of the graphical setup class is now fully available for my simulation, for our simulation of the Lorenz model, okay? After adding, let's say, the graphical setup class, now we are ready to be able to use, let's say, the facilities of the graphical setup class. Come inside the event handler of the button, which is labeled x versus time. So over here you will be declaring here the variables in order to, let's say, capture the values from the user interface, which is a form itself, which will be coming from, you can say, the top level from the input boxes. And over here you will change sigma rb. So these will be the names of the variables you want to use in order to capture the information from the boxes. Okay, let's say x will be capturing, and x is expected to capture information of the float. So float dot parts. So this information will be hopefully coming from the text box one. So that's why you will doing it like this. Okay, similarly, you will capture the values from the other text boxes like this. Okay, follow कर Yes, sir. जी सर. So this way. So you will be replacing here the names of the variables where you want to save the values coming from. This is x, y, z, time, del, t, s, r, and b. Means one more line is needed here. This will be for b. Now
You will change the, let's say, the text boxes numbers in respective order. That's all. Okay, so these lines will make sure that the information which is coming from the text boxes will be captured and will be saved. You can save for further processing. Okay, so over here. Thereafter, now you can plan to run. You can plan to draw the graph for a certain amount of time. Okay, so do it here. Why? Okay, over here you will say, okay, one thing more here. Before going to use any loop, you have to create objects, create useful objects, like the object of the Lorenz model class, Lorenz model obj, and you will do it here like this. You will say here x, y, z, t, dt, sig, r, b. So you will be passing down the information to the object, I mean of the learned model graph via by calling the constructor of the class. So जो information आपने text boxes से capture किया है, that information will be handed over to the constructor for the creation of the object of the learned model class. Okay. And after creating the object of this class, now we also need to create the object of the, let's say, graphical setup class in order to avail the facilities of the, you can say, of the graphics. So then graphical setup. So DS, that is new, and this is demanding where do you want to draw the graphs. This means the current form. Okay. Now you can opt for having you can say drawn the axis, the horizontal axis, vertical axis. For that purpose, you will be calling drawx is a function of the graphical setup class, and it demands you where do you want to start the operation. So you will put here, let's say, certain value. Okay, so that can be done like this. Let's say you can declare here float x naught. This will be the, you can say, origin point of the coordinate axis, and that can be done, let's say, this dot uh, client size dot you can say width divided by 2. So this will provide you the central coordinates to the x to be x naught, abscissa coordinates by using the width. And the same way you can use here, you can declare here the ordinate of the center, ordinate of the origin. ये वो काम है जो आप पहले भी करते हैं. The same way we are doing it. So this is redundant information, redundant coding. इसी के लिए कम से कम जानो हमें graphical setup की क्लास बनाइए ताकि उसको बार-बार डमी डिक्लेयर ना करना पड़े. Now you can draw, you can say the axis. Over here you can provide here x naught, y naught, and over here you can provide how much lengthy the axis will be there. So you can do it here. Let's say you want to take x-axis to be lengthier one, let's say 300 pixels, and y-axis to be lengthy to be, let's say, 300 pixels, and you want to put on the x-axis to be x, and upon the y-axis to be time, because you want to draw the graph between x and t. Okay, so this a single function draw axis will be drawing both axes, the horizontal axis and the vertical axis for you. Now
You can use, let's say, the while loop. While you can say here the object obj dot t is, let's say, less than 100 seconds. So you can go on drawing the graphs. Okay. आपने कंडीशन लगा दी है कि जब तक टाइम जब 100 सेकंड से नीचे है तो you can go on. So first of all you can say uh, you can means plot and then evolve. It depends on you. ds dot you can say here gg dot fill ellipse, and fill ellipse will be demoning here. We can say the brushes. Let's say the blue blue color brush, and over here you will be specifying the point where you want to draw the graph, single point. So this is a, let's say, x naught plus obj.x times a certain scale factor, let's say 50, and then obj, then y naught. The reference point is the origin. Y naught minus obj times time x multiplied by, let's say, 50, and the size of the point is, let's say, 4 by 4, and this will be the time on the horizontal axis. On the vertical axis there is x. So you have to evolve obj dot evolve. This will evolve the information and you will be getting x with the passive time, and you will be getting the graph. So we can look at our situation by using this button. जिसके लिए आपने coding complete की है. In the same way, you will be completing it's in the coding for the other buttons. लेकिन इसमें जब आपने चलाया तो over here you have to give here, you can say the input information, like look at our first information is x is 1, y and z are 0. Okay, and sigma r and b are also there. Okay, x1, y and z0. Look at, I'm closing it. I will be, first of all, you can say fixing the values of the input variables. I will go to the design stage. Over there I will select one of the, let's say, input boxes where I will start writing down the values to be fixed so that I do not need to change again and again. The first value is, let's say, x is 1. Then is the second value is, let's say, 0. The third value is also 0. And the start time is 0. And del t is, let's say, 0.01. And sigma is, sorry. And what is the value of the sigma? Means appropriate value which has also been suggested in the book. R की वो आप different values use कर सकते हैं. R is, let's say, आपको जैसे नजर आ रहा R5, 10 and so on. Or sigma is 10, B is, let's say, 8/3. So we are fixing these values. Sigma is 10, R can be used to be 5, and B is 8/3. 8/3 means 2.666, 2.67. Okay, तो ये वैल्यूज फिक्स करें ताकि हमें बार बार चेंज ना करनी पड़े. जिस किसी वैल्यू को चेंज करना होगा वो हम चेंज कर सकेंगे इजीली.
So you will be clicking here x3. स्टूडेंट नजर आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. So this is the graph you are looking at also in the book. Look at for r is equal to 5. Okay, r is equal to 5, then r is equal to 10, then r is equal to, और ये z वर्सेस टाइम का ग्राफ है. किसका? z वर्सेस टाइम. हम तो x वर्सेस टाइम को भी प्लॉट कर रहे हैं ना, तो वो भी कर सकते हैं. सिर्फ आते हैं बाद में. So here you can stop, you can again go. So इसमें x3 r is equal to 5 के लिए है, फिर इसकी वैल्यू 10 रख लें आप और फिर इसको करें तो you will be getting the graph like this. और अगर आप 25 करते हैं, ठीक है, and you will be getting the graph like this. ये x versus time के ग्राफ है. अच्छा, आई एम सॉरी, वर्टिकल एक्सिस के, अच्छा वो लेबल सही नहीं लगा. ये कोडिंग के अंदर आ जाए. ओरिजिनल एक्सिस के ऊपर जो है वो टाइम है और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर एक्स है. इसी तरह स्टूडेंट्स कोडिंग इज सेम, एवरीथिंग सेम, और आपका जो कंसर्न ग्राफ है वो डिफरेंट होगा. एक्स वर्सेस, हम जेड में चले जाते हैं. लेट्स से जेड वर्सेस टाइम. ओके, इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसमें इंफॉर्मेशन सारी उसी तरह कैप्चर की जाएगी. नॉर्मल मॉडल की ऑब्जेक्ट, ग्राफिकल सेटअप के ऑब्जेक्ट, एक्स नॉट वाई नॉट. जस्ट यहाँ पे जब ड्रॉ करेंगे तो z वर्सेस t है, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे z है, और उसी तरह लूप होगा. जस्ट ग्राफ जो होगा वो z और t के दरमियान होगा. ओके, बाकी हर चीज वही है. ठीक है. Okay, sir. So the values are given. You can try z versus time. तो x3 और zt ऑलमोस्ट सेम आते हैं, और 10 को यूज कर लीजिए, वो भी उसी तरह आएगा. 25 को कीजिए. तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो 25 है उसके लिए स्केल फैक्टर छोटा करना पड़ेगा. ठीक है, इसमें हमने 50/50 से किया हुआ, तो ये हम लेट से 10 करते हैं. इधर यहाँ पे 20 कर लें, 10 या लें, चलो इसको हम 10 करते हैं लेट से. ये z वर्सेस टाइम के लिए, और यहाँ वैल्यू जो है वो 25 के लिए वी आर गोइंग टू ट्राई. ओके, so you are getting the pattern. Okay, Yes, sir. Yes, sir. so very simple. The coding is almost over. मीन्स ये सारी आपने बटन्स में कॉपी करनी इंफॉर्मेशन, और जो बुक के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है वो पैरामीटर यूज करके उसके अंदर आपने करना है सारा. जैसे मैं एक और करता हूँ, जैसा कि आपको ये बुक में नजर भी आ रहा है, और इसमें टाइम स्टेप उसने लिया हुआ है 0.00001. मैंने जो है वो 0.01 लिया है. थोड़ा सा मीन्स छोटा करना चाहिए. z वर्सेस x का ग्राफ है, इसको हम करते हैं. लेट्स लुक एट z versus x को. Student, same coding will be copied in z versus x, x versus z over here. तो फर्क क्या होगा? ओरिजिनल एक्सिस के ऊपर क्या होगा? x, और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर z. ठीक है.
and the scale factor can be taken to be almost let's say same 20/20. Okay. और इसमें देख लीजिए कि जो इंफॉर्मेशन है x is equal to 1, y is equal to 0, z equal to 0 और r is 25. Okay, r is needed to be taken to be 25. Okay, we need to you can say move down. Okay, uh, in the coding you can say x naught can be taken to be slightly leftward 100 and y can be taken down, let's say through 300 pixels, and the scale factor is needed to be taken, let's say smaller. And also inside the Lorenz model class, time interval is also taken to be smaller. Let's say, where is the time? Okay, over here. So del t is 0.001 according to the book in order to avoid the uncertainties. अच्छा ये बहुत छोटा हो सर गया। आर की वैल्यू 25 करते हैं। हाँ जी वो करना भूल गया मैं। थैंक यू। एक तो ये है, दूसरा ये है कि इसको 20/20 कर लें। अभी मैंने स्लीप नहीं लगाया इसमें, इसके बावजूद ये काफी स्लो हो गया। अब वो टाइम चेंज करना मैं भूल गया। ये देखो उस टाइम स्टेप छोटा किया तो बहुत स्लो हो गया ना। Yes, sir. ये ऐसे बटरफ्लाई बनती है। ओके Okay, sir. तो कोडिंग हो चुकी है, सारे बटन्स बाकी बटन्स में आप खुद कॉपी कर सकते हैं ना। Yes, sir. ये करके तो मुझे चेक कर लीजिएगा दूसरे ग्राफ भी। तो Okay, sir. next time inshallah we will slightly look at other aspects of you can say attractors. Okay, अदरवाइज तो हमें अगला टॉपिक करना चाहिए। ठीक है, आप इसको दूसरे बटन्स Okay. कर लीजिएगा, मैं भी भेजता हूँ इसको। ओके ओके सर। थैंक यू। सर पेपर का पैटर्न बता दीजिएगा। अभी आप जस्ट वेट करें अगली क्लास तक। ठीक है, ठीक है सर। डिस्कस कर रहे हैं कि ऑनलाइन में कैसे किया जाए। ओके ओके सर। ठीक, थैंक यू। तो क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके। सर ये जो बाकी बटन हमने चेंज करने हैं
चेंज नहीं करने Yes, उनके अंदर yes, sir. डबल क्लिक करके तो कोडिंग कॉपी करनी है, और एक्स वर्सेस वाई है तो एक्स वर्सेस वाई के बीच में वेरिएबल चेंज कर देने हैं, और Okay, बाकी sir. वही चीजें हैं, और बुक के मुताबिक जो उसने वैल्यूज कही हुई हैं वही देनी है, ठीक है। Okay, sir. दैट्स ऑल, बाकी तो वो कॉपी पेस्ट ही है, और क्या है। मेन तो था कि डिजाइनिंग और कोडिंग जो भी है एक दफा हो गई तो सिर्फ करना है, ठीक है।